Hey, good evening, everybody, and welcome to RATA. RATA is a 72-year-old organization which represents the micro, small, and medium enterprises in the field of air conditioning and refrigeration in India. We reach out to almost 6,000 MSMEs across India through 13 regional committees. Our committee members across Mumbai is about 100 plus, and that's how we are able to reach out to a large number of micro, small, and medium enterprises. Now, over the last 6 months, we've been picking up various topics that affect small businesses in our industry. And we've had senior government ministers like Nitin Gadkari ji, the managing directors of various large manufacturers who have all been to reach out to the small businesses. Today, we have another interesting topic. Now, digitization and using the internet has become the way of doing businesses. Earlier, it was for large organizations, and today, even small businesses have to be on the internet. But when going on the internet is also an opportunity where you can get cheated or a chance of fraud. So like any new technology, you need to be aware. So we were very keen, based on the feedback from our members that we got, to do an educational program on what cyber fraud is, on how do you actually protect yourself, learn about this, and be safe around this. So to help us understand this better, a very close friend of mine, I've known him for the past maybe about 12 years now, and he's been very kind enough to come to the association and talk to our members. So welcome to the show, Vicky. Thank you, Ajit. Great. It's great to have you here. For all my viewers, Vicky has a very it's a very elaborate introduction, but I'm going to put it in short and tell you who Vicky is. So Vicky is a advocate, author, trainer, a speaker. He's ECPCB certified DPOTM, first Indian advocate. Now, I don't understand what those initials mean, but one thing is very clear. It means something really big. Okay, so that's what it is. So first Indian advocate from the European Center for Privacy and Cybersecurity. He's also from the Maastricht University, Netherlands, founder member and co-chair of International Association of Privacy Professionals. Vicky was invited by the Maharashtra Cyber, appointed by the Ministry of Home Affairs India for suggesting inputs for the amending Information Technology Act in the year 2019. Vicky Shah specializes in preventing cybercrime, digital payments fraud, business email compromise incidents, and recovering of monies. Vicky was included in the panel of legal experts for advising Office of Controller of Certifying Authorities, Government of India, on legal matters relating to the Information Technology Act effective from September 2014 to 2017, and on the IRCTC legal panel from March 2016. He's ex-NASSCOM Senior Associate Cybersecurity and Compliance, ex-DSCI Manager Cyber Labs, ex-Department Head and Assistant Professor and of the Institute of Forensic Science, Mumbai, Government of Maharashtra, ex-National Payments Corporation of India, as Senior Manager, Risk Management, and as Consultant, Cybersecurity and Cyber Law, and the ex-CEO, India, of Payment Risk Council. That's one hell of an introduction, Vicky. And this is, and trust me, it's just 30% of the entire profile that I can talk about Vicky. But tell me something, Vicky. How did you even get into this? I know you for such a long time, and you've been, you've been a techie, which is, we all heard about hackers and cybercrime, and so you have been in this. You got interested at a very early stage when internet was also at a developmental stage. So how did you even get into this field? Because you're a lawyer later and a techie cybercrime specialist. So how did this come? Just to know how this field is to our viewers. So I'm an accidental lawyer. I never intended to be a lawyer. I was always a techie. But what happened is when I did my post-graduation from Bombay University, we had this opportunity from NASSCOM where they were doing cyber safety awareness campaigns. This used to be a 1-week program addressing the students, faculty, judiciary, the professionals and stuff. And I happened to speak to one of the directors then, Mr. Rajiv Vaishnav,
He said that people can work with us, and then I was a student that point in time in 2003 when Mr. Vijay Mukhi and all, they had to come to our college in KC and they did a cyber awareness program. So I said, sir, I would like to work with you. Why don't let me know if I can be of interest? Because we had a topic of internet security also during our curriculum. So he said, we will give you a chance. You can contact us. And then subsequently in 2004, again I met him and he said that you can work with us. And I said, sir, you just give talks. We don't get chance to work with you. Last year I came, but you didn't allow me. So he said, we have an option of you to train police officers. If that excites you, Okay. you can be part of this. And that's how I am in this journey. So I Very became a trainer to interesting. law enforcement first. I became a trainer to police. I used to teach them computers, IP, how email works, because that is the level of. This is 2004. October 2004 is when I started. So this journey with NASSCOM on their initiative of Mumbai Cyber Lab, which is a joint initiative of Mumbai Police and NASSCOM. And after that, I got a chance to be working on the technicalities of the cases where we used to give inputs to officers, and then the interest started. So earlier it was just to train officers, but then it was more serious. So this is the journey which started in 2004, and now I'm in 2020, 16 Awesome. years in this. From what I understand, there are only a handful of people like you who have in-depth knowledge in this field, at least. You can count in numbers in India. We are maybe totally around 1,000 professionals with different domains: audit, governance, compliance, risk, law, forensics. So it's a mix of all. You will find some 2,000 members who are actually in this domain. Most of Okay. them are otherwise in the audit space, consulting space. Okay. Very interesting. So, just before we get going, I just want to tell you we've got a lot of people who's joined us from across the country. I've got Urvesh, he's joined us from Ahmedabad. Got Christopher, he's from Bombay. Then we have Mihir, who's actually is the vice president for RATA. He's in Mumbai. So we've got a lot of people. We've got Nandkishore Kotkar. He's actually joined us from Pune. And we've got Paras Siroya. He's actually the ex-president of RATA. He's also in the national committee. So lots of people who have joined us. And right now, I think we've got over 100 odd viewers who are sitting and listening to us live across the channels. So pretty interesting. It kind of tells you the seriousness of this and the challenge. So, Vicky, tell me something. Small businesses, we use emails, all right? Our employees use emails, and that's very common, right? We use free Gmails. Some of us use paid Gmails. We use different kinds of servers. Have there been cases? Can you share us some cases as to how people have got cheated just by using the email, the ignorance? What actually has happened? So we as users, we have a habit of doing reply to all. Okay, we don't check who the email is actually going to, and the email provides you option to redirect the reply to some other email, and the appearing email will be different. Now this setting is itself inbuilt in the free as well as the paid emails. So Okay. what happens is, whenever a mail is received, though the mails have become sophisticated in the last 5 years or so with the two-factor password being implemented, but primarily people used to never see the sender email. They used to just reply all, type the message in the body, and hit send button, Okay. without realizing that the email is not going to the sender, but somebody who appears to be a sender. So this is known as man in the middle or business email compromise incident, where you are being targeted by the perpetrator, and typically they will intervene only when there is a invoice related email or finance related discussion. Till that point in time, they will sit in the system and they will just read your emails or observe the communication. So this is one aspect to it. Secondly, small business or big business, email is your communication channel. Hate it, like it. Without that, you cannot survive. You cannot communicate, and that is supposed to be the most secure instrument for any business today. And it doesn't take that much of cost. I mean, you can have a paid account, which is much better than the free account, because your free account does not give you legal remedy. Nobody reads the terms and agreement. They just create a new account. It very clearly says you should be using the email for your personal use and not for commercial use. Okay. So free email also in that way is not advisable for businesses.
A small domain name is just cost you 500 plus some taxes for a year, which gives you an email ID, which should be sufficiently sufficing a business. And slowly, as you progress, you can then have more IDs and more users. Oh, so I have a question to add to this. So, say for example, we have got this MSME Udyam registration and everything. So, if I send a payment follow-up through a free email, is that validated in the court of law? That would be considered as a validation, but the problem is you will have to prove that that email account belongs to you in case of dispute, which is very difficult because unless you pay, you don't get invoice from Gmail. How will somebody certify that? So that becomes an issue. Then you have to show that you are using this account from so many years, you created it on so and so date and time. The first welcome email that you receive, you have to preserve it with you as a proof of ownership. So all this will come into question when you are using free email accounts. So it should be better that you use a paid account because or a personalized company domain, because that relates to the identity of the company. It gives a sense of confidence to the clients also that yes, this company is genuine. It uses business email, so our email communication is secure. Basically, it gives confidence to your customers. Okay. All right. Now, also the other thing that has happened right now is with the whole COVID, post-COVID payments. I mean, it happened with demonetization, and I think more than demonetization, after COVID, it's all digital payments, right? Yeah. So you get NEFTs, you are using credit card payments, you're getting Paytms, you're getting different wallets payments and everything. And this is all being tracked by employees, by your team, and everything. Can you tell us what is companies that have faced difficulties or been ignorant and they have paid a price for what they call as payment frauds? So I'll give you 2-3 case studies which are there. The first one is there was this gentleman who approached me day before yesterday. He received an email from his client asking to make a payment. And this company is actually very smart because they don't do online payments, they do physical payments in the bank. But what happened is that the email which they received, they did not verify it from the sender. There were wrong RTGS details mentioned in the email, and the customer ordered his accountant to put that in the form of RTGS and physically submit that in the bank. Now, in this case, you are yourself giving the bank account. You can't blame the bank for any fraud because you got the email. It is assumed that you must have verified it from the sender that it belongs to the sender, and then you have given the instructions to the bank. So this is one of the way in which the fraud happens. Alternatively, there is this UPI, which is a new system for receiving and making payments. It is one of its kind in the world. It is a global first. In fact, India teaches the world how to do payments. That is the level of UPI. So it has a function called collect or receive payments. Now, this words of collect and receive is misguided by the perpetrator to the genuine user. And they tell them that you will get a request of collect, which that means you are collecting money from me, whereas actually the perpetrator is collecting the money from you. And they ask you to authorize the link and give the pin, and the money goes from the account instead of being receiving money. Plus, okay, there are one second. The people who are listening to us now are small business people. Okay. So you and I know perpetrator ka matlab kya hai, but let's use simple language ki chor hai to chor hai yaar. Let's call him the same thing in a Hindi maybe to for larger reach. जो फ्रॉडस्टर होते हैं या जो जिनको आपको नुकसान पहुंचाना है उनको हम परपेट्रेटर बोलते हैं. वो क्या करते हैं ना, आपको फोन करेंगे कि सर आपको हम पेमेंट करेंगे लेकिन आपको हम कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे. वो कलेक्ट का मतलब है कि हमारे से आप कलेक्ट कर रहे हो, एंड द पर्सन जो आप मतलब आपको मौका ही नहीं देगा कि वो मैसेज पढ़ने के लिए. आपको बोलेगा कि कलेक्ट रिक्वेस्ट आई, मतलब कि आप हमारे से कलेक्ट कर रहे हो, ना कि हम आपसे. बट एक्चुअली जो फीचर है वो ऐप में कलेक्ट मतलब कि आप दूसरों से कलेक्ट करते हो, ना कि किसी को देते हो. जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो अब आप पे या सेंड मनी करते हो. जब आपको रिसीव करना है मनी तो अब आप कलेक्ट या रिसीव का फंक्शन वो यूज करते हो. तो वो फ्रॉडस्टर आपको बोलता है कि आपको एक लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करके आपका यूपीआई पिन डालना है, तो वो पैसे मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाएंगे. एक्चुअली वो ऑपोजिट होती है. तो दिस इज वन ऑफ द वे. ये यूपीआई में जो इशू होते हैं ये इस कलेक्ट रिक्वेस्ट की वजह से होते हैं. इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के लिए देते हैं.
आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, बिजनेस के जीएसटी डिटेल्स हो गए, आपके गुमास्ता शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हो गए, आपका उद्यम का सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब सर्टिफिकेट ना आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है। उस पर लिखना है कि ये डॉक्यूमेंट आप किसके लिए दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। क्योंकि अगर आपने उस पर कुछ नहीं लिखा तो उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट या उसकी मिसयूज होके कोई अकाउंट भी खोल सकता है और कोई आपकी आईडी यूज करके किसी और ट्रांजैक्शन में आपको फंसवा भी सकता है। तो मतलब जो आपका भी कहने का मतलब है कि अगर कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है, एक रबर स्टैंप बना कर रख दो। जब भी कोई बना डॉक्यूमेंट दे रहा है, रबर स्टैंप डाल दो और उसमें लिख दो कि ये कॉपी मैंने ये बैंक के लिए दिया हुआ है, ये बैंक एसबीआई बैंक के लिए दिया हुआ है, या कोई के या लिए फिर दिया है, टेलीकॉम के लिए दिया है, वीजा के लिए दिया है, आपने हाँ, केवाईसी के लिए दिया है, आपके बच्चे के एडमिशन के लिए दिया है, वॉट एवर इज द रीजन, आप उस पर डाल दो हाँ, ताकि उसका मिसयूज ना हो। अगर आप वो लिखते नहीं हो तो वो डॉक्यूमेंट और कहीं सारे चीज पे हो सकता है। एक हमारे पास केस है, एक अकाउंटेंट है, उनका सैलरी सालाना 1,50,000 था। ये 2015 की बात है। तो उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे एलआईसी की पॉलिसी के लिए। अब एलआईसी एजेंट ने पॉलिसी ना ओपन करके उस डॉक्यूमेंट का मिसयूज करके एक अकाउंट ओपन कर दिया बैंक में और एक ब्रोकिंग हाउस में। और वो अकाउंट ओपन करने के बाद इनसाइडर शेयर ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन हुए और नाम इनका, केवाईसी इनके, लेकिन मोबाइल नंबर भी फेक इशू किया था सिम कार्ड का वो डॉक्यूमेंट यूज करके, और ईमेल भी एक नया बनाया था। तो ईमेल और मोबाइल फ्रॉडस्टर के पास थे, लेकिन सारा केवाईसी इनका था। यहाँ तक कि राशन कार्ड की कॉपी में इनके माँ का नाम था, वो भी उसमें मेडन नेम मॉम का भी डाला हुआ था एज अ वेरिफिकेशन डिटेल। और जब ट्रांजेक्शन पता चले कि ये फ्रॉड है तो कोर्ट से नोटिस इस बंदे को आई, ना कि वो फ्रॉडस्टर को। तो ये इशू होते हैं लॉन्ग टर्म में, आपको कभी वो वापस हैरान करने या परेशान करने आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा नहीं बट ज़्यादा सावधान रहना है फिजिकल फॉर्म में। इनफैक्ट ऑनलाइन अच्छा है क्योंकि ऑनलाइन तो सब ट्रेसेबल है, आपको पता चलेगा किसने किया, कहाँ से किया, किस सिस्टम से किया। बट फिजिकल जो इफेक्ट होती है उसकी रिपरकशन ऑनलाइन में होती है और वाइस वर्सा। So Akash has a very important comment to make. He says reverse use of UPI is being done widely by imposters on OLX, posing as buyers for your product posted on sale. So I not guess. only on OLX, Akash, it is also on your search engine and also on social media. So typically when the government allowed the liquor shop to be open, the delivery guys to open, people used to search, instead of using the food apps, they used to search on Google. And Google search used to allow to claim a particular business or change a particular mobile number and claim it as your own till the time verification is not there. And people were asked to pay 10 rupees for activation, and then in lieu of that they have lost 1 lakh rupee, 80,000 rupees, 20,000 Yeah. rupees, and so on and so forth. So not only OLX but also on your Google search engines. In fact on OLX they try to portray as an army officer. वो आर्मी ऑफिसर बोले हमारा पोस्टिंग हुआ है, हमारी बाइक है, हमको इसको बेचनी है क्योंकि अभी हम इधर इसको चला नहीं पाएंगे, हमारी पोस्टिंग अभी नॉर्थ साइड में हो गई है, तो हमको इसको कम दाम में बेचना है। तो a bike like a bullet which is otherwise available for 1.5 and plus, you get it for 25,000. तो वही एक पहला आपको अलर्ट होना चाहिए कि इतनी सस्ती बाइक कैसे मिल सकती है। तो So इंटरनेट पे if तो it is कुछ, too good to be true, then you need to be thinking, right? यस देयर इज नथिंग टू गुड टू बी ट्रू। कोई फ्री लंच नहीं है, फ्री लंच में Uh, आपके पैसे जा रहे हैं साथ में। but tell me something, Vicky. We are all using credit card swipe machines and everything. Have there been cases where I take a swipe machine, I'm using it? Are there cases where fraud has happened even in these swipe machines? So swipe machines very less, unless you give your card to the petrol pump person and he goes and swipes it with the pin. Then he may make a duplicate copy or clone it. But generally on your ATM, if the ATM is in a remote place without security, be cautious because there are times people put a skimmer in the machine. स्कीमर इज अ डिवाइस, एक स्कीमर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपको क्रेडिट कार्ड के रीडर के ऊपर रहता है। वो आपके क्रेडिट कार्ड की कॉपी बना देता है या डेबिट कार्ड की कॉपी बना के उसमें मेमोरी होती है उसमें स्टोर कर देता है, और आपकी ये कार्ड फिर इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे यूज होती है। How do I बिकॉज check whether not to make sure that this सो doesn't happen with me? So when you are putting the debit card in the ATM machine, before putting the card, just shake the card inserter whether there is something loose or not. Because nowadays very few machines are taking the card inside the machine
and after the transaction they give you. But old ATMs still exist where you have to put the card and take the card back. तो जब आप कार्ड स्वाइप करने के लिए उस मशीन में आप डालते हो तो आप चेक करो कि उसका कोई लूज कनेक्शन या लूज हैंडल नहीं है, वो फिक्स है सिस्टम में. और हो सके तो आपका जिस बैंक का कार्ड है उसी बैंक में आप यूज करो, ना कि क्रॉस बैंकिंग, अनलेस देयर इज अ इमरजेंसी. क्योंकि कई बार क्रॉस बैंक की वजह से आपका कार्ड अगर किसी मशीन में फंस जाता है, अटक जाता है, तो आपको काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है उस कार्ड को वापस लेने के लिए. ठीक है. विकी, केवाईसी तो नॉर्मल हो गया, हर चीज के लिए केवाईसी करना पड़ता है. KYC related ignorance and fraud, what does that happen there? Why does that KYC related frauds happen? And do you have any cases which has come to you कि KYC कर दिया और नुकसान हो गया मेरा? नुकसान अभी पेटीएम अलाउ करता है आपको वीडियो केवाईसी और ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो उसमें फ्रॉडस्टर आपको बोलेगा कि हम केवाईसी पेटीएम से बोल रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो जैसे कि क्विक सपोर्ट या टीम वीवर या एनी डेस्क आपसे डाउनलोड करवाता है. वो डाउनलोड करने के बाद पूरा का पूरा मोबाइल का कंट्रोल उस फ्रॉडस्टर के पास होता है. फिर वो बोलेगा अभी आपको ओटीपी आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, वो ओटीपी पढ़ सकता है क्योंकि उसने आपके मोबाइल का कंट्रोल लिया हुआ है. और आपके केवाईसी के जगह पे वो खुद का केवाईसी यूज करता है क्योंकि उसको खुद के आधार पे ओटीपी आएगा. मोबाइल नंबर आपका है लेकिन केवाईसी उसका है. और वॉलेट आपकी 10,000 की लिमिट 1 लाख की हो जाती है. और वो केवाईसी मतलब इट्स अ पेमेंट बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट बन गया, अभी वो वॉलेट नहीं रहा, अभी वो बैंक अकाउंट बन गया है. और उसके बाद वो IMPS, NEFT, UPI सब कर सकता है उस नंबर से क्योंकि उसका केवाईसी है, नंबर आपका है. तो अगर कोई फ्रॉड हुआ या कुछ हुआ तो आप पकड़े जाओगे, वो आपके पास क्वेरी आएगी पुलिस से और उसके पास नहीं आएगी. Oh God. And how do you make sure this doesn't happen to you? So अगर आपको किसी का फोन आता है, if somebody calls you that I am from the bank, please do not entertain that person. Say that I will visit my home branch, and I will get whatever to be done. I will personally go and do it. I will not share anything on the phone. Don't download any software on the phone which allows such remote access. जैसे ये क्विक सपोर्ट हो गया, टीम वीवर हो गया, एनीडेस्क हो गया. अगर आप डाउनलोड करते हो, जब आपको यूज करना है तभी आप उसको ओपन कीजिए, वरना उसको शट डाउन कर दीजिए. क्योंकि इस सारे ऐप से आपकी फोन की SMS की रीडिंग्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस सारा ही वो पढ़ सकता है. आपको लगेगा किसी वो OTP पड़ेगा, बट पूरा का पूरा फोन का कंट्रोल उसके पास होता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वो परमिशन देता है. तो डोंट यूज सच सॉफ्टवेयर, डोंट डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर. अगर हो सके तो नेट बैंकिंग जिस नंबर से आप करते हो उसको एक अलग फोन में रखिए, उसमें आप ना ही व्हाट्सएप ना ही कुछ कीजिए, सिर्फ बैंकिंग और OTPs के लिए वो यूज करें. और दूसरा नंबर जो आप आम जनता को पब्लिकली दे सकते हो बात करने के लिए, उसमें आप सारा व्यवहार, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस आप कर सकते हो. तो आपका रिस्क कम हो गया, सामने वाले को उसका एक्सपोजर नहीं है. Interesting. So there's some 2-3 questions which have come. So I thought probably we should just take up those questions which are related. One of them is, can a smart chip be duplicated which is on a credit card? There is a device called Shimmer. Skimmer is for magnetic stripe. Shimmer is for a smart chip based, but it is a very rare thing because it takes some time for it to be cloned. So you will not find that in the country, in our country at least. But foreign, there are reported cases in Thailand and US. But what happens is there is a server level attack, a ransomware or a malware which affects the entire sequence of cards of a bank customer. So not only you, but there would be some 150, 200, 300 people of the same bank in the same sequence of card. They all will be cloned, or there will be some manipulation in the server level authorization where that happens at a bank server level. So you are protected for that. Insurance is there. RBI has asked all the banks to take insurance. So if there is some wrong by the bank, you will get your money back. So chip cards cloning is not practically possible. I mean, theoretically, yes, because of the device, but it doesn't happen. We don't get much cases in India. Only cases of clone cards of the banks we get at a bank level, not at an individual level. Interesting. Vidya is asking a very interesting question. अभी सबके घर पे वाईफाई है, हम वाईफाई डोंगल भी यूज कर सकते हैं, वाईफाई डोंगल भी यूज है, हॉटस्पॉट भी यूज करता है. सो ये मिसयूज हो जाता है? इज इट वेरी इजीली वाईफाई अगर आपने WPA 2 प्रोटोकॉल जो है, अगर आपने वो सेटअप नहीं किया, अगर आपका ब्रॉडकास्टिंग हिडन नहीं है, आपने मैक बाइंडिंग नहीं किया, तो चांसेस है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ये सब सेटिंग है टेक्निकल जो आपके राउटर में होते हैं, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. पर मेरे ख्याल से विद्या यह पूछ रही है कि आपके जो कार्ड पे वाईफाई है, विदाउट पिन आपका ट्रांजैक्शन ऑथराइज होता है, उसकी बात कर रही है शायद.
तो क्या है ठीक कि है। आरबीआई ने बताया है कि अप टू 2000 rupees you don't require pin, you can just tap and pay and go. Now SBI has allowed up to 10,000 with Titan Pay. They are come with a new solution. Up to 10,000 rupees, they will not ask for your OTP or PIN. तो वाईफाई उसका एक RFID प्रूफ लेदर पाउच आता है, पैकेट मतलब पर्स आता है, उसमें आपको वो कार्ड रखना है ताकि कोई वाईफाई आपके पीछे से वो स्वाइप ना कर सके, इनकेस अगर वॉलेट में आपका कार्ड हो तो। उसके अलावा आपके यू शुड हैव टू स्ट्रेटेजी ऑफ कार्ड, वन कार्ड विद मिनिमम लिमिट up to 5-10,000 which you can use for petrol pump and remote places wherever you go out. You use that card which has this less limit, and have a premium card which you use only when you require to use for a booking of air flights or other high scale usage. So limit your risk, and that will solve your purpose. Ketan has a very interesting question. He says, what are the risks involved in using contactless card, which is the new thing which has come now? That's what I Contactless said. card. Contactless means tap and pay. That is what it Yeah. has limit. So RBI is allowing up to 2000 without any OTP, but more than 2000 only SBI has allowed. Other banks have not yet considered it, but tap and pay. So you just wait for maybe 3 more months or 6 months, and cards will be obsolete. UPI is going to kill everything. That's good. Once you start Okay, let's. using UPI and Yeah, I QR guess so. code, I guess. Yeah, cards are it'll obsolete. take over the. True. Yeah. Okay, let's move from the payments to very use. अगर कुछ भी चाहिए तो गूगल में जाके सर्च कर ले. हम वेंडर्स ढूंढते हैं, कस्टमर्स ढूंढते हैं, सब कुछ गूगल में जाके सर्च कर ले. अब गूगल में सर्च करने से कोई फ्रॉड होता है? गूगल में सर्च करने से बहुत सारे फ्रॉड इसलिए होते हैं क्योंकि गूगल अपने को वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और गूगल ये डिस्क्लेमर भी देता है कि जो भी आप ढूंढते हो आपके खुद के रिस्क पे है अगर आप कुछ व्यवहार करते हो तो। वाई डू पीपल रैंक हायर इन गूगल? क्योंकि वो पॉपुलर है, उनकी रीच ज़्यादा है, उन्होंने मार्केटिंग और एसईओ जैसी टेक्निक्स यूज़ की है, इसके लिए उनका नाम पहले आता है। ये गूगल पे फ्रॉड कैसे होते हैं? अगर आपने कुछ खरीदना है या कुछ शॉपिंग करना है या कुछ परचेस करना है, तो आप जब भी कुछ शॉपिंग करो, जो आइटम आपको खरीदनी है, आप उसके ऑथराइज्ड डीलर या वेंडर के थ्रू खरीदो, ना कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे या कोई इंडिविजुअल बंदे के पास एक ताक, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू श्योर वेदर ही इज अ जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर और ही इज जस्ट अ फेक हु रिप्रेजेंट समबडी एल्स। और गूगल में अभी उन्होंने स्टार्ट किया है कि अगर कोई आप एडिट्स करते हो या कोई बिजनेस आप क्लेम करते हो तो आपको वो ओटीपी वेरीफाई करा के उसके बाद वो ब्लू टिक देता है उस पे। तो ये सर्विसेज अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी कम होगी, बट फिर भी इसके रिस्क है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ईमेल में 2 फैक्टर पासवर्ड नहीं डालते, जैसे कि ओटीपी। आफ्टर गिविंग द पासवर्ड यू आर सपोज टू गेट वन ओटीपी मैसेज, और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप एक है, उसमें आपको एक कोड आता है, वो डालने के बाद आप लॉग इन कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग अभी भी सिंगल फैक्टर पासवर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपका गूगल, सारा ही कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो आपको सबसे पहले बेसिक हाइजीन और बेसिक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। और बट गूगल में तो हम तो हमारे नाम भी डाल देते हैं, एज भी डाल देते हैं, प्रेफरेंसेस भी डाल देते हैं, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं हमारे बारे में सब कुछ गूगल हम मैं खुद मेरे बारे में इतना नहीं जानता हूँ जितना गूगल मेरे बारे में जानता है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेसी। तो हाउ डू आई प्रोटेक्ट माय प्राइवेसी ऑन गूगल? So whenever you use your phone, no, your smartphone gives you an alert that the app is trying to access your location. Do you want to allow permanently or only when the app is used? So use the setting only when the app is used. So जब आप उस ऐप का यूज करते हो तभी ही उसको उसका लोकेशन या वो डिटेल्स आपको पूछेगा, बाकी आपसे वो डिटेल्स नहीं लेगा। और गूगल में अगर आपने सब बाय डिफॉल्ट ऑन करके अभी तक रखा है तो आप google.com/my activity में जा सकते हो और वहां पे सब पॉज कर दो, पॉज। तो जितना आज तक का उन्होंने ज्ञान लिया है आपसे वो ले चुका, आज के बाद सब पॉज हो जाएगा। तो यू कैन पॉज योर एक्टिविटी फॉर फ्यूचर, प्लस यू कैन गो टू टाइमलाइन एंड यू कैन डिलीट योर लोकेशंस एंड अदर डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस हिस्ट्री व्हिच इज देयर विद द गूगल, दैट यू कैन डू। So most people are not aware of this, and I wanted to share. You can go to your Google timeline and see on 14th October 2018, 2 years behind where you were. You can find that. Google will tell you what you were doing on that entire day. That's Google timeline. So your privacy setting is not correct.
It's very interesting. You can go and see it, and that's If why the Google time knows a little permits, I more. will try to show you that link also by sharing my screen. Yeah, I'm sorry. If the time permits, I will go to the link and show you where you can go and stop that. Yeah, that's true. Okay, yeah, we can do that also. So one more thing, Vicky. Now you said that you should try to have paid accounts, which has got more on the emails. But small businesses, हम पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं मालूम है? हम एक ईमेल लेते हैं और 10 एम्प्लॉयज को बोलते हैं सब लोग लॉग इन करो, एंड वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट बाय डूइंग दैट. एक पासवर्ड और पासवर्ड शेयर होता है सबके पास. इवन इफ यू सी एम्प्लॉयज आल्सो नो, किसी बिटवीन एम्प्लॉयज आल्सो व्हेन दे कॉल अप, जैसे तेरा पासवर्ड क्या है, इमीडिएटली द पासवर्ड विल बी शेयर्ड. इट इज रिटन. सम पीपल पासवर्ड तो कंप्यूटर पे चिपका के रखा हुआ है, भूलना नहीं चाहिए. What happens when you do something like that? There have been cases which have come to you because of this, where cheating has taken place or fraud has taken place? So there was an instance wherein I have defended. So I was a lawyer for a bank, and one of the customer had shared the password, and we proved that because similarly we found a post-it tag on the screen which had a username and password. And in the affidavit, this gentleman had mentioned, "I don't share my password with anybody." So we had to prove that photograph which was taken on the crime scene by the cops. We proved that in the court, that see the photograph. He says there is no password, but this has a password. So how the claim is wrong, and the bank cannot be blamed for this. So the bottom line is, अगर आप password share करते हो और अगर आप ये email और सब common लोग use करते हैं, तो उस केस में लायबिलिटी जब आएगी तो उसमें आपको लीगल रिकोर्स का ऑप्शन बहुत कम है, बिकॉज आपका बेसिक हाइजीन नहीं है. इट्स लाइक आपका टूथब्रश आप किसी को दोगे, आप किसी का टूथब्रश यूज करोगे क्या? नहीं करोगे. तो पासवर्ड इज लाइक योर टूथब्रश, वो खुद आप ही यूज करना है, किसी को देना नहीं है. इसका एक सोल्यूशन भी हो सकता है. अगर एक ही ईमेल है और सबको यूज करना है, तो आप उसको कॉन्फ़िगर इस तरह से करो कि किसी को पासवर्ड ना पता चले, और जो आपका एम्प्लॉई जब मेल भेजेगा तो उसका नाम जाएगा, दूसरे का नहीं जाएगा. ऐसा सेटिंग आप कर सकते हो, वो पॉसिबल है. तो उससे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, लेकिन रिस्क तो वही रहता है. रिस्क वही रहता है. Yeah. Okay. So the other thing that small businesses now have been challenged is, now we are all working from home. April shut down completely, and अगले मार्च तक यही होने वाला है सर. oh, correct. Absolutely. We don't know. अभी अगले 1-6 महीने में भी ऐसे ही चलने वाला है. तो now the big question and debate is कि अभी तक तो मेरा कंप्यूटर पे मेरा सॉफ्टवेयर था, मेरा टैली भी मेरा कंप्यूटर पे था, सब कुछ मेरे ऑफिस में था. अब मेरे ऑफिस में नहीं है, लोग भी नहीं है ऑफिस में. तो दिस होल क्वेश्चन, क्लाउड सर्वर्स और office servers, what is your take on this? Which one is better, cloud or in your office? What is the thing on you? अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव की बात करोगे तो ऑफिस सर्वर का थोड़ा कॉस्टिंग में फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा मतलब 5%. बट आई विल सजेस्ट टू बी ऑलवेज ऑन द क्लाउड. रीजन बीइंग, इट इज ऑल ऑडिट ट्रेल इज मेंटेन्ड. आप चेक कर सकते हो किसने कहाँ से कब लॉग इन किया. ऑफिस के मशीन में आपको पता नहीं चलेगा कौन बैठा था, कब बैठा था, क्या किया. तो उतना एक डिफरेंस आ जाता है. अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, प्लस आपकी कन्वीनियंस है. आज जब हम कोविड नहीं था तो सब लोग डिपेंडेंट थे सिस्टम के थ्रू, उसके बगैर काम नहीं होता था. आज 6 महीने से लोग बिना सिस्टम के भी काम कर रहे हैं. मतलब कि क्लाउड का वो एडवांटेज अगर पहले से इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज आपको बिजनेस कंटिन्यूटी की इशू नहीं आती. ऑब्वियसली पावर चले जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी, जैसे परसों हुआ था. जब पावर चले गया तो सब बंद हो गया. बट अदरवाइज आपके क्लाउड काफी सेफ है, बिकॉज ये सब इतने सेफ है जितने कि आपका पासवर्ड सेफ है. अगर आपने पासवर्ड शेयर कर दिया और क्लाउड पे रखा तो इट इज बेटर नॉट टू कीप इन क्लाउड. देन यू गो आपके ऑफिस में रखो, एटलीस्ट वो ताले चाबी में तो रहेगा कम से कम. Yeah, but that is basic hygiene. But ऑफिस में रखने में भी कोई कंट्रोल नहीं है ना. अगर ऑफिस का मशीन हैक हो गया या फिर यूएसबी में किसी ने कॉपी करके लेके गया, वो आपके कंट्रोल में है भी नहीं. वो आपके कंट्रोल में नहीं, अनलेस कि आपने उसको ब्लॉक किया और अगर आपको अलर्ट आता है कि किसी ने यूएसबी डालने की कोशिश की. अभी ये सब अगर आपको फीचर चाहिए तो थोड़े सॉफ्टवेयर के कॉस्ट लगते हैं, तो पैसे बचाने के चक्कर में वो सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं कि कौन लेके जाएगा. अपने सिस्टम में ऐसा क्या डेटा है कि कोई लेके जाएगा.
ज्यादा से ज्यादा हाँ, क्या जाएगा, हमारा तो अकाउंट ही है और हमारा कस्टमर का डेटा है, लेकिन कस्टमर का जो डेटा है उससे आपके कस्टमर लूज हो सकते हैं, कोई किसी ने बेच दिया मार्केट में, तो आपको उसकी लायबिलिटी है। बाय द वे, आईटी एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आप एज अ कंपनी आपके क्लाइंट और कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो आपको अप टू 5 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है, करेक्ट, जो एक एब्सोल्युटली छोटी राइट, अमाउंट है 5 CR, बट 5 CR में किसी का बिजनेस बंद हो सकता है अगर कोई इंसिडेंट एब्सोल्युटली, हुआ। जैसे अभी लास्ट वीक डॉक्टर पाथ पाथ लैब्स का कस्टमर डेटा पूरा लीक हो चुका है, जो पेशेंट से जो जो टेस्ट किए हैं वो क्लाउड से वो पूरे लीक हुए बिकॉज ऑफ स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन विच वाज नॉट देयर। तो ऐसे अगर सिचुएशन हो गए तो जो पेशेंट ने टेस्ट कराया है अगर उनको कुछ नुकसान होता है तो वो उनके अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। नाउ विकी, अभी सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट्स, ईमेल आईडीज, पासवर्ड्स तो कमी नहीं है यार, सब जगह पे पासवर्ड लग रहा है। सो माय क्वेश्चन इज, एक तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, और ये पासवर्ड को ट्रैक कैसे रखे मैं, मतलब जब जरूरत पड़े कहां पे जाके मेरा पासवर्ड सेफ है कि नहीं मैं कैसे रखूं? या तो मैं पर्ची में लिखता हूँ, या तो फिर मैं एक एक्सेल फाइल बना के रखता हूँ। तो पासवर्ड कैसे होना चाहिए? सेम पासवर्ड होना चाहिए ताकि रिमेंबर करना आसान हो, या फिर कॉम्प्लिकेटेड होना? सो व्हाट हाउ इज पासवर्ड्स टू बी डन? पासवर्ड आपका इतना सिंपल होना चाहिए कि आप याद रख सको और इतना डिफिकल्ट कि सामने वाला गैस ना कर सके। पहले तो आपको आपका मोबाइल नंबर, आपकी वाइफ का नाम, आपका पेट नेम, आपका बच्चे का नाम, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, ये सब नहीं डालना है। 70% लोगों का पासवर्ड यही होता है, मोबाइल नंबर होगा या किसी का बर्थ ऑफ ईयर होगा या डेट ऑफ बर्थ होगा या समथिंग विच इज वेरी नियर डियर का होगा। तो ये तो आपको रखना नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल, एक वर्ड है जैसे सेटन, तो सेटन मतलब SATURN। अभी इसी को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखना है तो मैं एस बड़ा कर दूंगा, ए के जगह पे @ का साइन कर दूंगा, टी के जगह पे एक्सक्लेमेशन मार्क कर दूंगा, यू अल्फाबेट कैरी करूंगा। तो मैंने वही वर्ड अलग कॉम्बिनेशन में नंबर और लेटर्स के कॉम्बिनेशन में लिखा और साथ में ओके, कुछ नंबर डाल दूं, तो अल्फा न्यूमेरिक विथ स्पेशल कैरेक्टर इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर पासवर्ड। और आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए ताकि उसको 33 ईयर्स लगेगा किसी भी हैकर को हैक करने के लिए विद अ सॉफ्टवेयर। ओके, ओके। तो 33 इयर्स, ये 33 इयर्स फंडा क्या है? वो एक चार्ट है, आई विल शेयर ऑन योर ग्रुप, आई विल कमेंट ऑन योर, देयर इज अ पासवर्ड जितना कैरेक्टर्स के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी टू ब्रेक इट। अगर लंबा हाँ, पासवर्ड है तो उसको सालों लगते हैं, अगर छोटा पासवर्ड है अल्फा न्यूमेरिक तो जल्दी क्रैक हो जाता है। वो ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं उसको, जो हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड गैस कर सकता है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर आता है। तो अगर आप ओके, 8 से 10 डिजिट कैरेक्टर का पासवर्ड रखते हो तो वो पॉसिबली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ये टीम वीवर जैसा सॉफ्टवेयर यूज किया, की लॉगर है या कोई मेलवेयर है, पहले तो जितना भी आपको लिंक आता है ना फोन पे, अगर कोई अननोन सेंडर है तो लिंक पे क्लिक नहीं करना। वो लिंक पे क्लिक करने से भी आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसमें मेलवेयर ओके, डाउनलोड हो सकता है विदाउट योर नॉलेज। तो ओके, आपके फोन में एक सेटिंग है, डिजेबल डाउनलोड फ्रॉम अननोन सोर्सेज, उसको आप टिक ओके। करके रखना, उसको अनटिक मत करना, वरना ये अननोन सोर्सेज से आके सब डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, और पता भी नहीं चलेगा कि डाउनलोड हो गया है। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग यार। एंड हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माय पासवर्ड? मेरे पास 200 300 पासवर्ड है यार, इसको कैसा मैं रिकॉर्ड पे रखूं? हाउ डू आई कीप अ ट्रैक ऑफ इट? हाउ डू आई नो माय पासवर्ड इज सेफ और नो? व्हाट इज द सो बेस्ट वे यू वुड रेकमेंड? I personally use dual level password, which is authenticator based app, and in that phone I don't do anything except the OTPs and codes. तो मेरा ओके, पासवर्ड तो एक्चुअली सेम ही है सबके लिए, अच्छा, बट मेरा OTP हर टाइम चेंज होते रहता है। हाँ, ओके, 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 ओके। So I don't have to remember 200 passwords. I just have to go to the app and see 200 OTPs for So different use different. so what you're doing is you're using Google Authenticator app. आई यूज ऑथेंटिकेटर ऐप, आई यूज जोहो वन QR स्कैनर, अभी वो नया टेक्निक है। तो आप पासवर्ड डालने के बाद वो आपको QR कोड स्क्रीन पे आता है, फिर आपके फोन से आप QR को स्कैन करो, फिर वो ऑथोराइज करता है। करेक्ट। सो व्हाई डोंट, अब हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप क्या है? आई नो वी आर ऑल यूजिंग इट, आई आल्सो यूज इट फॉर ऑल माय साइट्स। तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप क्या है? हमने किसी ने सुना तो है नहीं, बट क्या है ऑथेंटिकेटर ऐप? ऑथेंटिकेटर ऐप दिखने में ऐसा आइकन दिखता है, अगर आप जरा ध्यान से देखो या कि ऑथेंटिकेटर ऐप या दिख रहा है। करेक्ट, ऑथेंटिकेटर जब दिख आप रहा है उस पर इसमें। क्लिक करते हो तो ऐसे आपको बहुत सारे OTPs आते हैं।
Yes. तो हर एक ऐप का एक ओटीपी होता है, तो आपने पासवर्ड जो डालना है डाला, फिर आप ओटीपी इसमें से डालो, और डोंट क्लिक के ये ट्रस्ट दिस कंप्यूटर, वो मत करना, Correct. वरना फिर उसका यूज नहीं। तो और हर एवरी मिनट, और हर मिनट में वो ओटीपी चेंज होते रहता है। हाँ, एवरी 30 सेकेंड दिस गेट चेंज। Second. Yes. लेकिन आपने एक बार यूज कर दिया तो जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हो तब तक वो आपको वापस पासवर्ड या ओटीपी नहीं पूछेगा। Correct. और अगर आपने ट्रस्ट ये डिवाइस कर दिया तो 6 महीने तक नहीं पूछेगा। तो Correct. वो गलती से नहीं होना चाहिए। Correct. So that's the beauty. So There is one Authenticator app is the way to go. one question it says कि अगर स्कैन एंड पे सेफ है या यूपीआई सेफ है, तो सर आंसर ये है कि यूपीआई ज्यादा सेफ है। यूपीआई जैसा कोई सिस्टम नहीं है Correct. मेरे हिसाब Okay. से, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ एनपीसीआई व्हेन द यूपीआई गॉट लॉन्च। सो यूपीआई इज द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू टू रिसीव एंड पे मनी। उसमें लिमिट्स भी 20,000 तक ही है, ज्यादा उससे होता नहीं ट्रांजेक्शन पर डे। तो आपके अकाउंट्स में से उतना ही अमाउंट का रिस्क होता है अगर गलती से भी कुछ हो गया तो। लेकिन यूपीआई इज मोर सेफ देन स्कैन एंड पे। So there is some 2-3 other questions which has come also. Is GPay safe? Is iCloud safe? What is your take on that? So GPay is also safe, but I don't use GPay. I don't recommend GPay because of personal experiences. GPay, the basic flaw is that your entire email is your UPI ID. They don't allow you to customize your payment ID. Then GPay, another issue is that there are pre-links, approved links, which when clicked, the money can get deducted. We have got cases of that nature also. I prefer to use Bheem UPI or the UPI of my own bank. जो मेरे अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का UPI ऐप में यूज करता हूँ, ताकि अगर कुछ भी हो तो मैं वो बैंक के पास जा सकूँ और वो बैंक मुझे सर्विस दे सके। अगर मैं किसी थर्ड पार्टी बैंक का ऐप यूज करूँ और यूपीआई यूज करूँ जो पॉसिबल है, तो मुझे वो बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस बैंक का यूपीआई ऐप मैं यूज कर रहा हूँ, भले मेरा अकाउंट फिर ये बैंक में है। तो वो सारे टेक्निकल चीज है। तो आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का आप यूपीआई ऐप यूज करो। फोन पे अच्छा है, पेटीएम भी अच्छा है, फिर अपना खुद जो भीम यूपीआई है एनपीसीआई वाला भारत वो अच्छा ऐप है। आप ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सब सिक्योर है क्योंकि यूपीआई पिन सेम ही है सारे ऐप के लिए। Awesome. अच्छा, so अगर ये सब करने के बाद भी अगर फ्रॉड हो गया तो क्या करना चाहिए? साइबर कंप्लेंट करना, जो क्या करना क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? See, I will suggest you whether it is a 1 rupee fraud or 1 crore rupee fraud, you have to do a police complaint. There is no for it. अगर आपने कंप्लेंट नहीं की तो that means that you are accepting the fact that वो ट्रांजेक्शन आपने किया है, पहली बात। दूसरा कि आपको अभी तो cybercrime.gov.in करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेंट घर पे बैठ के कर सकते हो। फिर वहां से वो कंप्लेंट लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहां से आपको कॉल आएगा और फिर आपका स्टेटमेंट्स वगैरह वो ले सकते हैं। तो ये इमीडिएट तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको पॉसिबल हो तो जहाँ पे आप रहते हो उस पुलिस स्टेशन में आपको जाना है। अगर आपका इंडिविजुअली आप अफेक्टेड हो तो, अगर आपकी कंपनी है तो जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया का पुलिस स्टेशन में आपको जाके कंप्लेंट करना है। ये डिफरेंस है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो जहाँ पे आप रहते हो वहां पे, और अगर आप कंपनी हो तो जहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है वहां पे आपको कंप्लेंट करना है। ठीक है। पंकज इज आस्किंग अ क्वेश्चन, इज द do the fraudsters sit in your PC or laptop? What he means is not sit in your PC, is that without your knowledge are they there on your computer? हाँ सर, उसको हम स्पाईवेयर या ट्रोजन या कीलॉगर बोलते हैं, मेलवेयर सॉफ्टवेयर, इसका कलेक्टिव टर्म मेलवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर। तो ये क्या होता है कि आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन होगा जो भी आप की टाइप करते हो या जो भी आप एक्टिविटी करते हो, आपके स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स लेके वो फ्रॉडस्टर को बाय अनोनिमसली ये पहुंचता है। तो उससे वो आपकी मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता है। लेकिन उसके लिए इंटरनेट पॉसिबल होना कंपलसरी है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। फिर उसके लिए वो फाइल ऑफलाइन मोड में सेव करके फीड ले सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिस्टम की जो लाइट होती है अगर वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रही है विदाउट एनी ऑपरेशन, तो समझना कि कुछ गड़बड़ है। ये कभी कभी सिस्टम ज्यादा यूज होता है उसकी वजह से भी होता है, और कभी ये सॉफ्टवेयर की वजह से भी होता है। अगर आप यूजर्स हो, आप क्विक हिल एंटीवायरस पेड सॉफ्टवेयर लो। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट क्विक हिल का मेरे को रिजल्ट अच्छा आया है मेरे जो क्लाइंट्स है उनके लिए।
रैंसमवेयर में भी उन्होंने अपने आप को क्विक हिल की वजह से बचाया हुआ है, बिकॉज क्विक हिल में Yeah. वो रजिस्ट्री प्रोटेक्शन का एक फीचर है। अगर आप बहुत लोग विंडोज यूज करते होगे तो आप क्विक हिल एंटीवायरस पेड सॉफ्टवेयर अगर लेते हो टोटल सिक्योरिटी, तो काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है ये सब फ्रॉडस्टर जो आपके सिस्टम में आके बैठेंगे तो। और आपके मोबाइल के लिए भी आप अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो पेड एंटीवायरस लेना जरूरी है, ना कि फ्री एंटीवायरस। So, Vicky, you are talking about Quick Heal. You must share with our viewers about CERT, Government of India. क्योंकि आज के तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली आज सुबह मुझे एसएमएस आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग कि आप क्विक हील को आप यूज करो, वी आर रिकमेंडिंग इट टुडे। आई जस्ट रिसीव दैट मैसेज टुडे मॉर्निंग। तो ये सीईआरटी एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? व्हाट इज दैट होल थिंग? व्हाई डोंट यू टेल द व्यूअर्स? सीईआरटी मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, सीईआरटी इन, ये भारत की नोडल एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज पर लॉ इनको अपॉइंट किया है देश में सिक्योरिटी के इश्यूज बताने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और क्या देश के लिए अच्छा है बुरा है उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो सर्टिन इज अ नोडल एजेंसी। अगर आपको वेबसाइट ब्लॉक करवानी है, अगर कुछ मॉनिटरिंग करवाना है, तो सर्टिन विल प्ले वेरी एक्टिव रोल इन, बिकॉज दे आर अ नोडल एजेंसी। और सर्टिन के वेबसाइट पे देर आर 76 कंपनीज एज ऑन डेट। ये 76 कंपनीज ऑडिट करती है आपके सिक्योरिटी का। तो अगर आपको कभी भी कुछ ऑडिट करवाना हो आपके वेबसाइट का, ईमेल का, सिस्टम का, तो ये जो कंपनीज है उनमें से कोई भी एक कंपनी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने सर्टिन का एक एम्पेनलमेंट टेस्ट होता है वो पास किया हुआ है। तो ये सारी कंपनीज आपको सिक्योरिटी और वो सर्विसेज दे सकती है। दूसरा, सर्टिन अगर कोई रिस्क है तो आपको बताती है कि ये रिस्क, जैसे अभी बहुत सारे कैम स्कैनर वगैरह ऐप थे उसको डिलीट करने के लिए बोला गया था, चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया गया था। तो जो ऐप आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है तो उसके बारे में भी ये सर्टिन आपको एडवाइजरी टाइम टू टाइम देते रहती है। तो आप आपके जो कंपनी में आईटी मैनेजर होगा या अगर जो आईटी का सेवी है उसको ये इनका एक न्यूज़ लेटर आता है सर्टिन का, उसमें आप सब्सक्राइब कर दो, फ्री ईमेल आते रहते हैं, अलर्ट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। विकी, तो हमारे कंपनियों में कोई आईटी मैनेजर होता नहीं है, हम कोई सब करना है। दुकान भी हम भी खोलते हैं, आईटी भी हम ही देखते हैं, दुकान भी हम ही बंद करते हैं। तो कोई आईटी मैनेजर नहीं है, हमको ही सब करना पड़ता है। तो आपका जो एएमसी का बंदा है या जो आपको कंप्यूटर सप्लाई करता है उसके थ्रू ये नॉलेज एटलीस्ट आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट। सर्टिन की सब्सक्रिप्शन सर्विस बेटर है। आप उससे एडवाइजरी टाइम टू टाइम ले सकते हो। और अगर आपके वहाँ पे कोई फ्रॉड होता है तो आपको एज पर लॉ मैंडेटरी है कि सर्टिन को बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा साइबर फ्रॉड मेरे वहाँ पे हुआ है। अगर आप वो नहीं बताते हो और बाद में पता चलता है और उसके वजह से किसी को और नुकसान होता है तो आपकी लायबिलिटी और रिस्क भी होती है। तो अगर कोई मेलवेयर अटैक हुआ, रैनसमवेयर अटैक हुआ या कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपको इंसिडेंट्स, एक ईमेल आईडी है कॉमन incident@certain.org.in, उस पर आपको रिपोर्ट करना है कि हमारे कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ, हमने पुलिस कंप्लेंट की है या हमने ये लीगल एक्शन लिया है या हमने ये चीज किया हुआ है। तो वो आपको इन्फॉर्म करना है क्योंकि ये लॉ का रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू इन्फॉर्म द इंसिडेंट्स टू सर्टिन विच इज अ नोडल एजेंसी। Okay. Pankaj is asking a question. How do I know if someone is seeing my computer? सर आपका कंप्यूटर जब अभी जैसे ये हम वेबिनार करते हैं तो अपने वेब कैमरे में एक रिकॉर्डिंग या लाइट आती है जिससे पता चलता है कि कैमरा ऑन है। तो ऐसे कुछ अबनॉर्मल चीजें अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर आपको दिखे, ये एलईडी का जो कलर है वो रेड, ग्रीन, ऑरेंज ऐसे 3 टाइप का कलर होते रहता है। तो उस रेड कलर से सावधान रहना। अगर कुछ सस्पिशियस होगा तो वो ब्लिंक करेगा अबनॉर्मली और वो कंटिन्यूसली जलेगा। तो ये एक अंदाजा लगाने के लिए है। बाकी अगर आप एंटीवायरस वगैरह अपडेट करके रखोगे, टाइम टू टाइम स्कैन करोगे, तो कोई आपके सिस्टम में नहीं आ पाएगा। Okay. Vicky, we have one question here. Suppose you get a call from a fraudster for OTP based fraud. Even if, say, for example, just common, no? The Jamtara situation, the Netflix Jamtara, where you're getting calls. So this is a typical case of that. मेरे को सामने से फोन आ गया, मैंने तो उसको पकड़ा गया कि ये फ्रॉडस्टर है, ठीक है, और मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं कहाँ पर रिपोर्ट करूँ कि ये फ्रॉड कर रहा है? ऐसा आदमी अगर मुझे फोन अगर किया। आप महाराष्ट्र में हो, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो एक वेबसाइट है www.reportphishing.in। मैं ये वीडियो जब लाइव हो जाएगा ना तो उसमें कमेंट में डाल दूंगा। आप महाराष्ट्र में अगर हो तो आप उस पर जाके रिपोर्ट कर सकते हो, और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र cybercrime.gov.in में रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा ये है कि
ये हमारा लॉ है ना, एक इंटेंट, मोटिव और कॉज ऑफ एक्शन, ये 3 प्रिंसिपल पे चलता है. तो अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है ना तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद वो सक्सेसफुल हुआ ना तो वो गुनाह होता है. तो आप पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ इंटीमेट कर पाओगे कि ये नंबर से हमको फोन आया था और इसने ये अटेम्प्ट किया था. ये ट्राई ने एक्चुअली एक काफी सारी चीज इसमें इम्प्रूवमेंट की हुई है, बट फिर भी अगर जिस दिन अपने देश में सिम कार्ड फ्री में अवेलेबल होना बंद हो जाएगा ना, आपके सारे बैंकिंग फ्रॉड्स, मोबाइल फ्रॉड्स बंद हो जाएंगे. दे शुड मेक इट सो स्ट्रिक्ट कि अगर आप पासपोर्ट लेने जाते हो तो आपको 10 दिन लगते हैं ना पासपोर्ट मिलने के लिए वेरिफिकेशन के बाद, वैसे ही सिम कार्ड इशुएंस आफ्टर वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके पहले होना ही नहीं चाहिए. तो ऑटोमेटिक आपके ये सारे फ्रॉड बंद हो जाएंगे. मैक्सिमम फ्रॉड्स आर बिकॉज ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स लेकुना. वो टेलीकॉम सिस्टम में इशू है, इसके लिए आपका मोबाइल इज लिंक विद योर ईमेल, विद योर बैंक, विद एवरीथिंग. ओटीपी एंड एवरीथिंग कम्स ऑन मोबाइल फोन. इफ योर मोबाइल फोन इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ टॉस. So, Vicky, a little off-track question. I spoke about that Netflix show Jamtara. That it's an entertainment show. Whatever they show on that show, is it real? Does it really happen? So I would say, see, I have seen Jamtara Netflix, and I was very disappointed because they did not focus on the issue, but they focused on the certain other aspects of it. If you see the Correct. theme of conclusion of it, Yeah, I think only the first two episodes actually talk about it, and then it goes political and everything. It went to a different tangent. Yes. So yes, those places still exist in the country, and there are officers who do good job. They do catch them, but the problem is what, people do not report the offenses. And I'll tell you a practical issue. अभी 10-15,000 या 20,000 का भी फ्रॉड हुआ ना, फ्रॉड है, लेकिन वो 15-20,000 रुपए के फ्रॉड के लिए अगर आप स्टेट मिशनरी और अमाउंट देखोगे कितना स्पेंड होता है उसको रिकवर करने में, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा. Sending the officer to that place, arresting the accused, taking care of the accused, court proceeding, trial, charge sheet. So the cost is increased because of all these efforts. That doesn't mean you should not investigate or you should not report. Yes, you should report, you should get justice, but in spite of so much of awareness, if people are giving their key, it's like, मेरा घर में मैंने ताला लगाया और चाबी रख के मैं घूमने गया और आने के बाद देखता हूँ मेरा घर चोरी हो गया. I can't cry, अरे मैं लूट गया. फर्स्ट इज यू हैव टू बी विजिलेंट. अगर आपने ये सब कंट्रोल डाले हैं उसके बाद भी होता है तो एक अभी नया साइबर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वो आप ले सकते हो और आपका रिस्क आप कम कर सकते हो. तो साइबर इंश्योरेंस से आपका जो थर्ड पार्टी नुकसान या थर्ड पार्टी रिस्क होता है वो कवर हो जाता है, जिसमें अगर आपने ओटीपी वगैरह शेयर नहीं किया तो ही. अगर आपने ओटीपी शेयर किया तो आपको कोई प्रोटेक्शन है. आरबीआई का एक सर्कुलर है, आरबीआई ओम्बुड्समैन भी बताता है कि अगर आपने ओटीपी शेयर किया तो आपकी लायबिलिटी पूरी है. अगर आपने ओटीपी शेयर नहीं किया और कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक आपको 90 दिन में पैसे वापस दे देगा. Okay. One question from Chirodeep Das. He's asking, is MS Defender from MS Office, from MS safe? Sir, if the Microsoft is licensed, then it is okay. If it is pirated, then I would suggest no. Yeah, I guess so. That's right. Okay, so great, Vicky. So we've pretty much taken all the questions and we've answered. So before we are pretty much towards the end of our time, but before we actually wind up, I want you to tell us basic, एक छोटे business को basic hygiene levels क्या maintain करना है IT related. As an owner, IT is driven by the owner himself. And post-pandemic now, without being digitized, it is very difficult. Your business will not run. It is very, very clear that if you are not digital, you are almost going to be sinking. It's just a matter of time. You can't operate today. That's not. So basic hygiene. Sorry? It is either perform or perish. Absolutely correct. So you can't say that मेरे को ये सब समझता नहीं है. But as an owner, you have to get into it and you have to make your business tech enabled, even if you have to go through this grind. तो इसमें बेसिक हाइजीन लेवल्स क्या होना चाहिए कि मुझे ये सब चीज चेकलिस्ट ध्यान रखना. सिंपल एंड स्वीट टिप्स फॉर यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. पहले तो आपको जो ईमेल अकाउंट आप बिजनेस के लिए यूज करते हो उसको आप पर्सनल के लिए मत यूज करना. मैंने कई बार देखा है आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी उसी में आता है, कंपनी का इनवॉइस भी उसी में आता है, सब उसी से होता है. फेसबुक भी उसी में है, लिंक्डइन भी उसी में है और यूट्यूब भी उसी में है.
जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाओ, नेवर साइन विद गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन. यूज द ईमेल ऑप्शन एंड साइन विथ योर ओन ईमेल. जब आप वो गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन साइन करते हो तो आपकी सारी परमिशन ऑफ रीडिंग द ईमेल वगैरह भी वो ऐप ले लेता है. तो ये आपको नहीं करना है. दूसरा, आपको टू फैक्टर पासवर्ड मिनिमम तो डालना, कंपलसरी सेटअप करना ही करना है. जो फोन आप बैंकिंग के लिए यूज करोगे उसको आप उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं करना. 2 नंबर आप ले सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वो अच्छी बात रहेगी, आपका रिस्क कम होता है. क्योंकि हमने ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, पिछले 12 साल में इनोवेटिव वेव से फ्रॉड देखे हुए. तो जो बेसिक टिप्स है, आप ओटीपी शेयर नहीं करना है. फोन पे अगर आया, एसएमएस पे आया, तो वो एसएमएस अगर बोलता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप केवाईसी वेरीफाई करो, तो उस तो लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है. फिर आपको ओटीपी शेयर फोन पे नहीं करना है. आपका पासवर्ड आपको लिख के कहीं पे नहीं रखना है. मैं आपको बताऊंगा, एक ये ट्रू कॉलर एप्लीकेशन सब लोग यूज करते हैं, और काफी लोग ट्रू कॉलर में अपना डेबिट कार्ड का नाम और डेबिट कार्ड फोन नंबर की जगह पे और एक्सपायरी वो वर्क नंबर की जगह पे सेव करके रखते हैं. तो जब आप ये करोगे तो ट्रू कॉलर के साथ वो भी नंबर सर्वर पे चला जाएगा. Correct. तो ऐसा आपको नहीं करना है. वो भूल जाते हो, याद नहीं रहता, उसके लिए उसको कांटेक्ट करके सेव करते हो, विच इज नॉट एडवाइजेबल. सो डोंट सेव योर कांटेक्ट एज योर कार्ड डिटेल्स. Password two factor for all the application that you use, including social media and emails. So that is the minimum safest way to protect yourself. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो साल का 1500 रुपये, तो आप पेड ईमेल अकाउंट यूज करो, फ्री अकाउंट मत यूज करो. वो 1500 रुपये में आपको काफी सारी सुविधा, विदाउट स्पैम, विदाउट एड ईमेल्स भी आएंगे, और आपके काफी रिस्क कम हो जाते हैं. पेड अकाउंट से अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको लॉग्स वगैरह मिलते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाएगा. फ्री अकाउंट में कम सपोर्ट मिलता है. दूसरा, आपके सिस्टम सब लाइसेंसेस होने चाहिए. आपका पासवर्ड शेयरिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय का पासवर्ड, अगर उसके फ़ोन वगैरह गुम गए और उसमें आपका कंपनी का ईमेल सेटअप है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क है. तो आपको उसको फिर डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, उसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा. कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर योर एम्प्लॉय लीव, पीपल फॉरगेट टू चेंज पासवर्ड, और वो Yeah. एम्प्लॉय को गुस्सा है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा था, जो भी हुआ था, वो बाहर जाके फिर वो उसको मिसयूज करता है. तो ऐसा भी हमने कई केस में देखा है कि आपके एम्प्लॉय के पास वो पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको चेंज करो रेगुलरली. साल में एटलीस्ट एवरी वंस इन 3 मंथ्स आपको पासवर्ड चेंज करना है. अगर आप रेगुलरली 15 दिन में नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, बट 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार पासवर्ड चेंज करो, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए है. कई बार हम पब्लिक कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उस पर आपको नेट बैंकिंग नहीं करना है, कंपनी ईमेल वगैरह चेक नहीं करना है, उस पर सिर्फ ब्राउजिंग करो. डोंट यूज योर ईमेल्स एंड बैंकिंग ऑन अ पब्लिक कंप्यूटर्स विच आर एट एयरपोर्ट और अदरवाइज. तो ये सब अगर छोटी छोटी चीज आपने फॉलो की, तो यू आर 80% प्रोटेक्टेड. वो 20% जो रिस्क है, उसके लिए आपको आइदर साइबर इंश्योरेंस साइबर ले, क्राइम स्पेशलिस्ट या फिर एडवोकेट तो मिल ही जाएंगे. नहीं, साइबर आप ये भी ले सकते हो, साइबर इंश्योरेंस ले सकते हो आप. इंश्योरेंस आल्सो. या साइबर तो इंश्योरेंस. तो अभी अपकमिंग है, अभी पिछले 4 महीने में 50% ऑफ सेल हो गया साइबर इंश्योरेंस का, बिकॉज ऑफ ये रिस्क. वर्क फ्रॉम होम, किसी ने सोचा नहीं था वर्क फ्रॉम होम होगा. अभी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आ गया है नया नया. पहले हम लोग Correct. ब्रिंग योर ओन डिवाइस का पॉलिसी बनाते थे, बीवाईओडी. अभी हम वर्क फ्रॉम होम का पॉलिसी बनाने बैठे हैं. मतलब बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है जो अच्छा है, और ऑनलाइन काफी सेफ है अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो. अगर आप उसकी सावधानी नहीं, इफ यू डोंट टेक केयर, इफ यू डोंट टेक प्रोटेक्शन ऑफ इट, देन यू कांट ब्लेम एनीबडी एल्स. Correct. Is Truecaller safe? Mr. Kotkar is asking from Pune. Since you brought it up, is Truecaller safe? Everyone uses it. Is it safe? Truecaller is safe till the time you are not sharing any of the private confidential details as your contact. Hmm. And I use a paid version of Truecaller, so Okay. that is much better than the free version. Okay. Vidya is asking a question: how much it's safe to work on non-secured website, as there's a lot of companies' websites still not secured? So Vidya madam, actually this is because of Google's policy. What they did is early this year, they said that all the websites should compulsorily be HTTPS and have a secure certificate on their site. Otherwise, they will mark them as a non-secure site. So that doesn't mean it is not secure.
बट यू हैव टू टेक केयर व्हेन द पेमेंट इज मेड. अगर आप कोई पेमेंट करते हो, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड जब आप टाइप करते हो, तभी वो HTTPS और वो गोल्डन लॉक आपको दिखना चाहिए. अगर वो नहीं दिखता तो उस पर आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना है, वो वेबसाइट सेफ नहीं है. ब्राउजिंग के लिए सेफ है, बट क्रेडेंशियल्स जब आप यूजर नेम और पासवर्ड जो हम इसको बोलते हैं क्रेडेंशियल, वो जब आप डालते हो तब आपको सावधान रहना है. Urvesh is from Ahmedabad. He's the Ahmedabad president. He's asking, yaar, it is impossible to remember new password for each site every 3 months. कुछ remedy तो बताओ यार. सर एक पासवर्ड कीपर करके सॉफ्टवेयर आते हैं. जैसे अगर ये आपने क्विक हिल केस्पर्स का ऐसा कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें इनबिल्ट फीचर है पासवर्ड कीपर करके, तो उसमें आपको सिर्फ उस ऐप का पासवर्ड याद रखना है, बाकी सब वो पासवर्ड याद रखेगा. ऐसा भी हो सकता है. अच्छा ठीक. And Mr. Christopher from Mumbai is asking, is there any features to have fingerprints as password? Sir, on the phone, yes, not on the system, unless you use a Mac Retina scan or Windows with a fingerprint scan, like the latest models which are there. Then instead of password typing, you put your biometric, but that is a big risk. In an uneventuality, nobody will be able to open the system. So always have a password text-based. That is a better way for continuity in other aspects. Awesome, Vicky. I think we are just about run out of our time, but I don't know if you must be having a look at the comments. People are extremely thankful for the kind of, they've all loved this session. People have stayed glued. I've been tracking the viewers. The viewership has just been increasing through and through the event. So I guess this is the need of the hour. It is all about knowledge. It's all about being alert and being aware of how to take care. That's the main thing. So before we wind up, anything else that you'd like to say to our viewers, Vicky? So I would say be legal, be secure, and be insured, because that is the only combination which will help you as a user. You can't have solution for everything. 100% safety is not there. I mean, we don't even know what will happen when we step out of from our house. So better that we take we know ourselves, we know our risk, and then we play around that instead of unknown risk which are so much we will have no clue otherwise. So especially for parents, because I understand you are a businessman, but for your as a parent, be friends with your kids on social media. Don't interfere and poke them whatever they post or not, but just be a friend, because of late I have seen a lot of children incidents are increasing in the lockdown. In fact, 2 weeks back, a lot of child pornography related issues are there. Then there is a cyber bullying, cyber stalking. Mental depression is happening because in the live session of the schooling, people are commenting about and bullying the students. So all these things are happening and we are getting such complaints. So as a parent, you should take care of your kids also. That is a last thing. So probably we'll do another event on the individual and stay focused only on parenting sometime. Sure. I've been doing it with various schools and colleges and PTA meets on child education separately. Awesome. Thank you so much, Vicky. It's been a pleasure to have you. Thank you for taking time out and sharing this wonderful information with us. Thanks a lot. And we look forward to engage with you. For being a lovely host, and thanks for the opportunity. Thanks RATA and all the members for supporting and being having the benefit of this. And I'm sure this is going to be archived, so everybody will listen to this in future and get benefit of this as well. Thank you. This video will be there on YouTube for everyone to see. So stay informed and stay safe. That's what we do. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you for this. Bye.